Okay, fine. So I guess people will slowly join. They have many have by mistake and downloaded GoToWebinar instead of Zoom. So I guess they didn't read the message properly. No issues. So we'll start, and as and when they join, let them then. We'll they can have a look at the video then afterwards. So now currently what over here the main crux of the topic, I think you all of you must have been able to hear my voice and see the screen, right? So if somebody uh, is not able to do that, not able to see the screen or everything, he can just uh, tell us over the chat. And also you all will be muted during the course of the uh, session. After that, then we'll unmute you if you want to ask some questions at the end, right? So now coming to the topic as to what is the insights, how was our trading journey over here, and what actually the learnings that we had in this over the course of 4 5 years, and what why did it take so much longer time for someone, and some people also do it in much lesser time if they get a proper kind of a guidance. So that's what our main focus would be, that how you can also not repeat the mistakes that we have done. And in case you want to are stuck at something, so you would be able to understand the reason कि कहाँ पे आप लोग stuck हो, right? So this session would be both in Hindi and English. Main points मैं दोनों में वहाँ पे iterate करूँगा, right? So I guess सबको वो फिर चीजें समझ में आ जाएगी. So now coming to the important point, ये slide में generally हर बार दिखाता हूँ presentation में. So this is slide why I show it, because first of all you people should know कि what attracts them to trading, right? मतलब why are people so that much attracted emerging markets India. And वहाँ पे अभी अभी कुछ 4 5 years 2009 10 के बाद there is a boom in such kind of you can say profession कि जहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा लोग सीरियसली ले रहे हैं, एंड many full time traders are there. उसके पहले इतना नहीं था, राइट? तो बाहर, बट यूएस में यूरोप में देखो तो दिस इंडस्ट्री इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, राइट? बाहर आपको इजीली वहाँ पे काफी ज्यादा मतलब ट्रेडर्स और आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जो कि इसको सीरियस एज अ सीरियस प्रोफेशन उसको परस्यू कर रहे हैं, राइट? सो उसका रीजन मतलब अब क्या है कि ट्रेडिंग के लिए आपको कैसे क्या चीजें अट्रैक्ट करती है. सॉरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहता है कि मनी मनी काइंड ऑफ एक्टिव होता है या पैसिव इनकम, जो भी आपको एज इन जनरेट करना है. अगर आप जॉब में हो एंड इफ योर जॉब इज नॉट दैट स्ट्रेनस कि अगर आप 2 3 घंटा दे सकते हो 9 to 3 अपने मार्केट के लिए, या फिर 2 घंटा भी मिनिमम दे सकते हो, उतना आपके लिए है सफिशिएंट, तो फिर आप एक तरीके का पैसिव इनकम यू कैन जनरेट हो गया. कितना इनकम है डिपेंडिंग कि आपका कैपिटल कितना है, आपका रिस्क कितना है, और आप कितना एज इन पोजिशन साइजिंग आप कितना लेते हो, क्वांटिटीज आप कितनी खरीदते हो. सेकेंड ये रहता है कि इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यू कैन यूज एनी स्ट्रेटेजी, आप कुछ भी कर सकते हो. मार्केट एक क्रिएटिव फ्रीडम आपको एक देता है, ऊपर से आपका कोई बॉस नहीं है, राइट? नो एक्सटर्नल रूल्स आर देयर. सो पिछले बार जिन्होंने सेशन यूज किया होगा उनके लिए एक ये रिविजन है, बट आई जस्ट कंप्लीट इट इन शॉर्ट टाइम यहाँ पे. तो कोई रूल्स नहीं है, आप अपने बॉस हो, आपको कितना क्वांटिटी क्या लेना है, कुछ नहीं लेना है आपको, वो खुद ही आपको डिसाइड करना है, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको इसको फुल टाइम प्रोफेशन में देते तो मार्केट्स आर ओनली ओपन, इक्विटी मार्केट्स आई एम सेइंग अबाउट 9 to 3 रहता है. अगर आप कमोडी मार्केट्स में भी करते तो कमोडी मार्केट्स कोई दिन भर बैठ के ट्रेड नहीं करता है, वहां पे उसका वो रहता है कि दे ऑल्सो फिक्स देयर स्लॉट्स, दे विल वर्क इन 11 से 1 या उसके अराउंड वो एक वर्क करेंगे, और फिर आफ्टर पोस्ट 6 7 o'clock से 2 घंटा वहाँ पे 2 3 घंटा. तो मैक्सिमम कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स का भी एक सेट रूल होता है कि वहाँ पे आप इस टाइम फ्रेम में ज्यादा ट्रेड्स लोग डालते हैं. तो ये जो भी चीजें रहती है, सो इन दैट केस वर्क लाइफ बैलेंस आपको वहाँ पे वो मिल जाता है. सो मेन चीज, इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्किल बिहाइंड इट. बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है. what you have to invest is your mental infrastructure. that is very important because वही ये सिर्फ स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, एंड जितना आपका स्किल और जितना आपका पर्सनालिटी इस प्रोफेशन के लिए जितना आप रेडी कर पाओगे, दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू इन दैट लॉन्ग टर्म. सो
फर्स्ट उसके बाद जो है एक जो फेजेस रहता है. सो व्हाट आर द फेजेस इन द जो ट्रेडर के जर्नी में होता है. सो दिस आर व्हाट द फोर फेजेस दैट वी हैव एनकाउंटर्ड. तो सबसे पहले जो रहता है इनिशियली व्हेन आई वाज इन जॉब, आई जस्ट कंप्लीटेड माय मतलब एमबीए के टाइम पे थोड़ा सा वहाँ पे हुआ था. तो आई वन सम ऑफ द कपल ऑफ स्टॉक कॉम्पिटिशन्स वहाँ पे इन एमबीए में. तो वहाँ से इंटरेस्ट वगैरह पहले से ट्रैक करता था. बट सीरियसली देन आई स्टार्टेड सीइंग ओके नाउ ओके आई कैन डू दिस एंड एवरीथिंग. सो बट वहाँ पे फेज वन में फिर क्या होता है कि यू आर काइंड ऑफ इमेच्योर. वहाँ पे आप व्हाट यू कैन से कि यू आर लुकिंग टू मेक क्विक मनी इन द मार्केट. सो आप मेरे पास अगर 20,000 है 30,000 है तो मुझे नहीं इसको मुझे 1 लाख करना है राइट जल्दी से जल्दी. एंड उस केस में आपका जो रहता है what happens is that then you start looking for shortcuts. राइट. सो आप शॉर्टकट्स के लिए आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो कि जैसे अगर यू हैव लेस कैपिटल इन दैट फेज, मैक्सिमम पीपल विल हैव लेस कैपिटल, वेरी फ्यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल. एंड अगर बहुत कम लोग बड़ा कैपिटल है तो वो तो और ज्यादा डेंजरस है बिकॉज वो आप द बिग कैपिटल रहेगा तो यू विल टेक मच हायर रिस्क जिससे वो मतलब कभी ना कभी तो इट विल गेट एग्जॉस्टेड. सो वहाँ पे व्हाट यू विल डू इज टू बाय penny options. So like if say Reliance is 1000, just for instance आप 1030 का कॉल बाय कर लेंगे राइट, या फिर उसका पुट बाय कर लेंगे नीचे का बहुत आउट ऑफ द मनी दूर. तो दो तीन स्टॉक इफ द स्टॉक डजंट मूव फॉर 2-3 days also that value will just become half. So if you have taken say 1 lakh का position अगर आपने लिया है, if you have a very big capital 50,000 within a matter of 2-3 days, just without understanding, you don't know what is happening in the market, you are just buying it and hoping that the stock will just rally right or it will crash, what depending on the analyst call in the TV or आप कोई किसी का recommendation देख रहे हो whatever. So it's kind of a you're gambling in the market. You don't have understand anything about the phase of the market and you will just gamble. So in this phase you will lose, you will empty your account multiple times and you will just your phase would be to donate to the market. So this is your charity. You kind of say that you are doing a charity to the big players. You are just donating the money to them because then you don't understand what you are doing. Sometimes you will be able to hit home runs, like the option will be get multiplied 10 times 20 times वो बढ़ जाएगा. बट बाद में क्या रहेगा कि वो धीरे 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 आपसे पूरा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और वो आपसे पूरा निकलना स्टार्ट हो जाएगा. तो इन अ वे दिस इज द जो बड़े ट्रेडर्स है राइट. सो इस फेज में जो लोग रहते हैं उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है बिकॉज दिस इज व्हाट वी से इज द वीक प्लेयर्स जो होते हैं मार्केट के, वीक एंड इलॉजिकल प्लेयर्स राइट. सो दिस आर द वीक एंड इलॉजिकल प्लेयर्स जो मार्केट में होते हैं, जो सिर्फ डोनेट करते हैं मार्केट को. डजंट मैटर कितना परसेंट ऑफ सैलरी आप देते रहते हो. तो हमने भी डोनेट किया ऐसे. एवरीबडी गोज टू दिस फेज राइट. एंड बस बिकॉज वी थिंक वी डोंट फोकस ऑन लर्निंग, वी थिंक यार बहुत ईजी है, कुछ नहीं थोड़ा बहुत देख लेते हैं. वी फील दैट इट्स सो ईजी. I'll just use this indicator, I'll just use this 3-4 anything and I'll do this thing. आपने कहीं देखा होगा या सुना होगा and आप वहाँ से कर लेते हैं. Then what happens is कि after multiplying your emptying your accounts for multiple times, आप phase 2 में जाते हो कि आप देखना चालू करते हो कि okay what at least why I'm not able to make some money right, why I'm always losing. So social media like YouTube right, Quora and a Telegram channel, WhatsApp, whatever be, वहाँ पे what you do is that you look for what these people are doing right. and उसमें देखते हैं कि अच्छा उन्होंने बोला ये जैकपॉट स्ट्रेटेजी है right. so people somebody on YouTube you see a jackpot strategy and the jackpot strategy is a 100% win ratio or more than 80-90% win ratio. So then what happens is that one should be able to understand if they have such a huge win ratio then they should at least have crores with them right. And if you have so much win ratio and if you are making the strategy public right, if it is based on indicator, more or less market will adapt to it because everybody will start, every retail player will start using the strategy. Smart players will know this, वो strategy को वहाँ से वो चलने नहीं देंगे right. इसलिए आप देखते हो कि अगर आपने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे जो बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज है आपको इजीली अवेलेबल है, जो पुराने स्ट्रैटेजीज थे बॉलिंजर वगैरह, ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे पहले के 60s 70s 80s के टाइम पीरियड के, बट उनकी स्ट्रैटेजीज अभी क्यों नहीं काम करती है. तो ये आपको ये समझना चाहिए कि उनकी स्ट्रैटेजी व्हाई इट इज नॉट वर्किंग इज दैट बिकॉज मार्केट्स अडैप्ट हो गए, हम अडैप्ट नहीं हुए हैं. हम वही 1960-70 की टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी को लेकर आप यहाँ पे करें तो उस सेम इंडिकेटर्स भी तभी डेवलप हुए मैक्सिमम राइट. सो
यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो है वहां पे जो अगर मूविंग एवरेज यूज करके अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करते हैं, so that moving average was more than sufficient in 1970s and 80s to make tons of money. You didn't need anything else to do. But currently, if you use a moving average just blindly, then it would be kind of a backfire होगा वो, and it's kind of a कि वो हमेशा आपको जो है it will not show you the true picture of how the market is working, because you will not be focusing on the markets, you will be focusing on an indicator which is derived from a price, right? So आप एक तरीके से उसके डेरिवेटिव पे फोकस कर रहे हैं, ना कि जो एक्चुअल थिंग है आपके सामने जो है। तो यहाँ पे क्विक रिजल्ट्स के इसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, थोड़ा और कभी कभी आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो आप कॉन्फिडेंस चले जाओगे। उसके बाद आप इंडिकेटर्स वन स्ट्रेटेजी आप वैलिडेट करोगे, लाइक व्हाट विल हैपन इज दैट इफ यू आर यूजिंग एन एमएससीडी, इफ द एमएससीडी आपको कभी फॉल्स सिग्नल दिख रहा तो आप उसके बारे में देखेंगे कि अच्छा हाउ कैन आई मॉडिफाई इट, राइट? तो वहां पे आप इंडिकेटर, then someone will say use MACD with RSI or use MACD with this Bollinger Bands, कुछ भी दे देगा वो, राइट? वो आप देखेंगे ट्राई करके, हाँ रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं, एंड देन व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल देन ऐड इंडिकेटर, देन यू विल ऐड पिवोट से जो व्हाटएवर यू विल डू। द इशू इज दैट यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे बट योर साइकोलॉजी विल बी स्टिल लाइक अ 5-year-old. So why it is that is because the moment you make into loss, you will start panicking and you will not be able to understand why the markets are not behaving as you want. You will try to validate your positions कि नहीं मैं why मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो सब सही है, यहाँ पे इंडिकेटर ऐसा बता रहा है, ये सब बता रहे थे, ये नीचे क्यों जा रहा है, ये तो सब बुलिश साइंस दे रहा है, राइट? जैसे होता है हमारे इंडेक्स में, इफ यू लुक एट द बैंक निफ्टी वगैरह, अगर इफ यू अंडरस्टैंड कि बहुत लोग वहाँ पे हाउ द मार्केट फंक्शंस एंड इट इज ऑल लॉजिकल, मतलब उसमें कोई देयर इज नथिंग इज बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ कलेक्शन जो बहुत लोगों के आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो चीजें इस टाइप की, व्हाट यू कैन से, आई जस्ट ऐड अ सेशन ब्रेक, राइट? सो व्हाट यू कैन सी इज दैट यहाँ पे, तो यहाँ पे वी फोकस ऑन लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई यूज एनी इंडिकेटर लाइक से 20 का कुछ भी यूज कर लेते हैं, ये 20 एन MACD, ठीक है? So what is that over here is that he sometimes like over here, so sometimes over here you will feel like here, right? Sometimes you'll feel okay, MACD is rising and everything, it is breaking my 20 and everything, but as soon as it broke 20, if you end over here, focus on indicator, the market reversed against you just very quickly, right? And if a beginner who is there, who is just came fresh out of learning कि उसने indicator वहाँ पे देखा है एंड कैसी वर्किंग एंड वो सब देखा है, थोड़ा बहुत उसको पता है, सो इन दिस मैनर ही विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे सिमिलर फैशन यहाँ पे, राइट? over here the it broke the sorry over here it broke the 20 and also here MACD is नीचे, right? So you think that it's a sell signal, but the market is not moving anywhere, it is going up, so it is not over here also. Anything anything that you can say validate, so it is just a kind of a, you can say that after the charts, like after the chart has been made, एक बार चार्ट बनने के बाद I can pinpoint you the things कि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, but during live markets can you do that? It becomes very difficult, right? And that is why you lose. After making the chart, it becomes so easy. Oh, it is gap up entry, it closed over here, then it just came down, I could have easily sold over here, my stop loss was over here, and then मेरे को इतना पैसा मिल जाता, right? And this was the range जहाँ पे ये triple bottom बना है, so I should have bought into it. But the same instance is that if the market is crashing like this, right? You don't know if it is crash, if it would crash like this. If the market crash like this, it will just blast through your level and it will push you into a very deep loss. It doesn't matter what your MACD is showing, what your moving average is showing, or Bollinger Bands are showing, right? So the most important thing is that you will not be able to understand what you are going wrong, and you will try to validate it. So you will keep shifting. Sorry. You will keep shifting from one strategy to another. So phase 2 is all about shifting. You try to find your what is suitable for me and everything. यहाँ पे तो ये फेज में भी हम लोग यहाँ पे काफी देर तक स्टक रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मार्ट your psychology is, how smart you are. And most of us, generally speaking, are not smart when it comes to money, right? We can be smart when it comes to
study or anything, whatever it is. But when it comes to money or when it comes to management of money, we are not that smart. Why? Right? And so over here, because you're not able to accept that you are wrong, right? Or there is you're proceeding it in a wrong way. आप कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे उसे हमें कुछ मिलने नहीं वाला रिवॉर्ड उस तरीके से, राइट? हम उस सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे जो सिस्टम मार्केट एक बना रहा है। एंड मार्केट जो चलता है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर फ्लोज, आप कभी भी जैसे आप किसी भी स्टॉक का आप देखोगे तो वहाँ पे एक एक प्रोसेस, एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर फ्लो का एक उनका एक तरीका होता है, राइट? कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं कि एक्सिस आज 2% नीचे तो 2% ना हो। अगर वैसा रहता तो देन वी वुड हैव सेड कि ओके, नाउ देयर इज अ रैंडमनेस इन द मार्केट। बट व्हेन इट्स अ स्टॉक it's performing, if you're doing intraday or swing, doesn't matter, it's a matter of time frame. But when a stock is moving, there is kind of a structured manner when it moves, and when it is not structured, right? When it is not structured, then also you should be able to understand that today order flow is not clear in the stock, right? So it will not respect your indicators, it will not respect anything, it will just move randomly. And in that case, if you try to find logic in randomness, you will definitely only frustrate yourself in the long run. So that is also you can say what a trader should be able to do is that he should be able to separate randomness from your logical structured moves that you will get in the market. And definitely not all stocks will move random, right? There every day you would get some trending stocks. कुछ stocks रहेंगे जो sideways ही रहेंगे, अजीब से move हो रहे हैं. कुछ stocks proper trend में रहेंगे. Kuch stocks will just reverse, go and do give a very, you can say, such without any retracement, just a very big move on the down or the upside, right? So there are different you can say techniques and everything that one needs to then try to that you can help, that will help you finding this kind of phase. Now moving on to phase 3. Now you feel that okay, I have used so many indicators and everything, and now most of these are redundant, I don't use them. What I need to do is that I need to work on a few, or I need to work on the how the markets work or how they move, and then it would help me. So here you would reduce your use of indicator, right? Now you start moving from indicator based to price based trader, right? Because you feel that indicators give you so much lag that till the time you enter or exit a trade, they eat have a heavy chunk of your profits. And when if they give fake signals also, they give very much fake signals, right? So they trap you many times in the particular system that you follow. So here you then use other techniques, like you can price action or volume, you can say volume profile. So anything which is kind of a you can say a leading kind of a we can say leading indicator. That is also kind of a price, also kind of an indicator, because it indicates where the market is moving. So you use in this you use kind of a leading structure that we have, right? तो leading वाला जो हमारा रहता है, तो वहाँ पे हम लोग उसको यूज करते हैं, और आप फिर उसमें यूज करने का आप कुछ तो भी वहाँ पे आप ट्राई करते हो आपके मिक्स एंड मैच करके। तो यहाँ पे आप देखते हो कि हाँ मुझे एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, वो सब है, आपका डिसिप्लिन पेशेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बट स्टिल यू कैन से इतना अच्छा नहीं होता है। एंड आप बहुत बार कंफ्यूज होते रहते हो, क्योंकि होता क्या है कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आप ये सब चीजें तो कर रहे हो, बट जो फेज रहता है मार्केट का, मार्केट्स वोंट मूव सेम एवरी डे, इवन इफ इट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट, right? If it is a trending market, on 2 days you will get such good trending moves, on third day it will just come down and then just go like this, and over here you will not be able to understand what is. So even if you are making good profits in the 2 days, past 2 days, and अगर आप उसी दिन को बेसिस मान के थर्ड दिन भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जो मूव है आपका पूरा 2 दिन का प्रॉफिट लेके खा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप वापस बायर्स बना के सेल साइड चले जाओगे, फिर ये जो मूव आएगा आपका जो प्रॉफिट है वो तो ये इस मूव ने खत्म कर दिया, ये मूव आपको बहुत बड़े लॉस में ढकेल देगा, राइट? सो यू वुड दिस मूव वुड पुश यू इनटू बिग लॉस. So the important thing over here is to realize is that because you are looking at the short term picture, you think that okay, these are the things that market will move, so you have created your structure and system and I'll just follow it blindly. But the system is not tested. You haven't backtested the system for the past 10 years. Maximum people don't backtest their system even for 2-3 months, right? So सिर्फ 2-3 दिन देख रहेंगे, maximum 1-2 weeks or 1 month, and they think that the system is fine. But if you look at how the
if you spend some time in the market, how the markets move in December, January, February, March, and now April. Every month there was some changes in how the market was moving, right? Every month there was some new things what the market did. Every month वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे रैंडमनेस आ रही थी, कभी ना कभी, राइट? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीजें आपको समझ में कैसे आती है, क्योंकि इस चीज समझने के लिए आपको इन अ वे उतना वहाँ पे आपको यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट्स कैसे वहाँ पे कौन से फेस में वो आ सकता है, एंड वो कैसे आएगा। जितने चार्ट्स आप देखोगे धीरे धीरे आपका ये बढ़ेगा, वैसे करेगा। सो देर आर डेफिनेटली टेक्निक्स टू डू दैट, बट स्लोली एंड डेफिनेटली जैसे आपका एक्सपीरियंस एंड द चार्ट्स आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट्स विल डेफिनेटली गिव यू सिग्नल। एक सिग्नल आपको मिलेगा कि यहाँ पे क्या, अब इतना बड़ा यहाँ पे इसने रेड सिग्नल बनाया, उसके मतलब रेड कैंडल बनाया, उसके बाद नहीं ऊपर जा रहा है। तो इन अ वे यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर किसी और दिन अगर पीडीएच पे अगर सपोर्ट पे मैं बाय करने वाला हूँ, डजेंट मैटर इफ द प्राइस इज स्टॉपिंग, स्टिल आई शुड बी कॉशियस, बिकॉज जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा, और ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। सिंपल। सो इफ यू थिंक लेट द मार्केट डू, व्हाट वी डू इज दैट as the market come over here or everything, we just blindly see okay pdh पे है, this is kind of system जो लोग follow pdh और pdl, तो वहां पे just pdh पे आया, and if it is on pdh I should buy, you should just put a buy order away, and what happens is that market suddenly crashes down, and so what is that, you think oh my god, for the 2 days when it was coming over pdh, like over here, right, this one, it came over PDH, it moved so wonderfully, excellently it moved, it gave me good profits, it opened gap up, very good profits, then over here it went sideways, okay fine, but still I held it on, मैंने उसको होल्ड किया, तो मुझे बाद में मार्केट ने प्रॉफिट दिया। So you can see 1, 2 and this is a gap up, this 2-3 days are there, and then what happened is that on this day अगर आपने प्रॉफिट भी किया होगा, मार्केट विद इन अ मैटर ऑफ जस्ट 15-20 मिनट्स इट हैड एट ऑल योर प्रॉफिट्स, पूरा प्रॉफिट्स को खा गया आपका, राइट? एंड बिकॉज दिस वाज द बिग मूव ओवर हियर, एंड इफ ये साइकोलॉजी व्हाट हैपन इज दैट दिस टाइम मार्केट जो रहता है, इस टाइम आपको मार्केट ने इन अ वे इट सर्वाइव, आप सर्वाइव कर पाए, मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर आ गया, इफ यू वर इन लॉस यू विल एबल टू सर्वाइव। दिस टाइम इट गेव यू अ वेरी गुड you can say reward for trusting PDH PDL, but इस टाइम पे उसने आपको ट्रैप कर दिया, एंड ट्रैप इजीली नहीं किया, ट्रैप आपको बहुत मतलब अराउंड फ्रॉम 800 से 60 पॉइंट्स का डाउनफॉल आया सडनली, राइट? तो यहाँ पे आप ट्रैप हो गए इन अ वे, तो वापस आप फिर क्या होता है, आप ट्रैप हो गए, आपका दिख रहा है कि यार मैं 2-3 दिन प्रॉफिट करना है वो मेरा अभी खत्म हो गया, देन यू विल start to do some kind of a illogical and stupid stuff, like you will look for trying to find tops and bottoms in the market, right? If you think that okay, यहाँ पे again you can see if this is a crossing and indicator, again you will think that okay it's a buy, you will not see as the what is the larger picture is, suddenly the market will reverse, you will panic, you will again exit in loss, you will again buy somewhere over here, again you will exit in loss, you will panic, and then you will start doing unnecessary stuff which will only magnify your losses and will result in frustration, right? But the only thing, if you are able to understand, is that if you understand that what the market is doing, how the volumes are working, how the price action volume is there, then you would be able to understand what the big players are trying to do, and that is the only thing that will give you an edge in the market. We are too small to move the market even an inch, right? But should at least not be that dumb that even if you're not able to move an inch, but you should not let just a minute, yeah, even if you're not able to move it by an inch, but you should not at least give easy money to the big players who are just sitting there and trying to make their coffins fill at the expense of your capital, right? So this is also the important thing, that this phase you need to understand. You can see that the volumes over here, right? This is the very different important thing, volume and everything. It shows that what the big players are trying to do, and this is what, even if your indicators won't tell you volume and everything, they don't incorporate like VWAP and everything. Yeah, that is an indicator that okay incorporates volume and everything. But if you use VWAP also doesn't work beautifully every day.
it works only when there is a trending day or if there is a very good reversals happening in the market. So reversals and everything, if you use the price action only or anything can combine, you can easily catch reversals or trending day in the market. It doesn't matter, because what is the definition of reversal? If a support over here market is breaking, it has broken but it is not able to sustain, and then it is वो नीचे वहां पे उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है वहां पे, राइट. सो एंड लाइक दिस, सो इफ दिस इज अ काइंड ऑफ अ resistance, so if this kind of a resistance market has broken this and then suddenly it just fell, it's kind of a, what we can say is this is a fake break, right? And what is a trend? If the market is not just going higher and higher lows and it is not able to, yeah, not able to be able to break the all the new highs it is making, right? So even if you use a moving average also works in trending day, but you should understand how would you know in the opening that the stock will go in a trend. Nobody knows. If after the stock moves for a certain moment, then we say okay, it is in trend, but it might happen that till that time the stock would have given most of the move and you will only be able to get little bits and pieces in that particular stock. But though also the reversals in this kind of phase of market, like March was kind of this phase, right? If you look at the March, this was the kind of a market we had, right? But in case of April, this is the kind of a markets you are having. Reversals are very common every day. Even index is opening gap up and reversing. Sometimes gap up going up means it's kind of a randomness in the market. It's coming down, again going up, coming down, again going up. Slowly it is going up. But this kind of move that we had in March, in April, if this is the move, the next day index will open gap up and it will go up. Then again it will fall over here and it will gap up. So why this is happening, that you need to understand. This is happening because of the wicks. So what is a wicks? If somebody who is new who understands what is a wicks, so wicks are the kind of a fear component that our market has. कितना fear है हमारे market में, क्या है उसमें, वो आपको वहाँ पे समझ में आता है उससे, right? So in a way जो ये चीजें रहती है wicks, अगर आप इंडिया का अगर देखें, right? What is the wicks in March and April? अगर आप उसको compare करोगे, so अभी 23 चल रहा है, right? And if I go to the daily chart, एंड यहाँ पे मार्च है, तो मार्च में आप देखोगे 14 के नीचे 13-14 के यहाँ पे आ गया था, ठीक है? बीच बीच में तो ये फेब के एंड में तो यहाँ पे वो होता है, बट मार्च में यू कैन सी वेयर वाज द विक्स एंड वेयर इज द विक्स इन अप्रैल. दिस इज द विक्स इन मार्च, ये झुंड बना है, एंड वेयर इज द विक्स इन अप्रैल, राइट? वेयर वाज द विक्स लास्ट अक्टूबर नवंबर में, यू मस्ट हैव सीन कि वहाँ पे वोलेटिलिटी आई थी. सितंबर एंड इन अगस्त, जुलाई अगस्त मार्केट रैलीड, काफी रैली किया था, राइट? तो वेयर वाज द विक्स 16 के नीचे था. तो इन अ वे एक्चुअली 16-17 का, जो 17 मान लेते, 17 खतरा मतलब जैसे हम उसको बोलते जो भी, तो 17 का लेवल व्हाट इज देयर, 17 का लेवल शुड बी एक्टेड से 17 के ऊपर रैंडमनेस वुड बी हाई इन द मार्केट, एंड 17 के नीचे इफ देयर इज अ ट्रेंड, देन दैट ट्रेंड इज okay. So some people out again, how many have joined? Okay, so we'll start. I'll just share the screen again. We are really sorry for interrupting you. Okay. So that is another issue that people in India we face, and that also has hampers our trading sometimes. But we have to sit with actually 2-3 connections. So there is a Geo-Fi and this hotspot, mobile hotspot, and this broadband, because then it becomes, you don't know when the broadband will stop. At least it might stop for a couple of minutes, but that would be can become a game changer if you are in the market with heavy positions, right? So this is the this. Okay, sorry. Yeah, I think it was muted. So what I was trying to say is that like this is also one of the issue, the broadband that we have over here and in India. So that is also kind of we have 3 connections. We have Geo-Fi, we have the hotspot, and also the broadband. But if the broadband gets disconnected only for a couple of minutes, and if you don't have any backup or anything, or if your electricity goes, sometimes it happens in cities also. So that can become a spoiler for you, right? So over here you can see is that this
VIX, the 17 over here is that whenever the market is above 17, it causes randomness in the market. Why? It will give you wild swings in the market. So if you are doing positional when the VIX is high, so you will find it very difficult to at least make good money sometimes. Why? Because the gap ups and gap downs would be very frequent in the market. But when the VIX is low, if you could see the chart of Nifty in March, so if it has opened gap up, it has gone it has rallied much, and if it has opened gap down, then it has gone up. So this is the what you can see. This was happening in March. You can see from here the March started, right? Not a single day it just blasted downwards, right? It was when it was coming down also there was very small candles and ज़्यादातर टाइम ये ऊपर ही जा रहा था, right? अप्रैल में ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, right? There is so much randomness. It is going up. एक दिन वो नीचे जा रहा है, दूसरे दिन ऊपर, वापस नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर. तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ से 22 मार्च के अराउंड यहाँ पे जब ये हुआ, मार्च खत्म, जब एक्सपायरी पास में आने लग गई थी, उसके बाद से ये फिर से मार्केट में ये स्टार्ट हो गया. एंड यहाँ पे भी आप देखोगे कि जैन में, तो जैन में व्हाट वाज देयर अगेन, जैन में यहाँ पे नीचे था विक्स. सो व्हाट वाज देयर, मार्केट वाज साइडवेज. सो इन अ वे जब विक्स बढ़ जाता है तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दिस काइंड ऑफ अ सिग्नल्स की मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है. सो दिस काइंड भी साइन ऑफ अ कि निफ्टी या जो भी आपका इंडेक्स है उसका टॉप शायद पास में. इट इज नॉट अ सर्टेनिटी, बट इट इज अ साइन ऑफ अ कॉशन कि विक्स बढ़ रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है एंड द विक्स इज आल्सो इंक्रीजिंग. देन इट इज अ साइन ऑफ अ कॉशन दैट अगर आप केयरफुल नहीं हो तो किसी एक दिन भी निफ्टी कैन फॉल 2 to 3% एंड आपको बहुत बड़े लॉस में ढकेल देगा. मार्केट इज गिविंग यू सिग्नल्स, राइट? इफ यू आर नॉट अवेयर इनफ टू रीड दैट सिग्नल और आप वहां पे नहीं पढ़ रहे हो, दैट इज योर मिस्टेक. यू कैन नॉट ब्लेम द मार्केट. हम सबसे इजी वे हम क्या तरीका देखते हैं, हमारे वॉट एवर मिस्टेक्स दैट वी डू, वी ट्राई टू ब्लेम अदर्स, राइट? दैट इज द इजीएस्ट थिंग दैट वी डू कैन डू इन आवर लाइफ. कि अगर आपका कोई एग्जाम दे रहा नहीं क्लियर हो रहा था, आप बोलते नहीं मेरा इशू यहाँ पे ये हो रहा था कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था, घर पे मेहमान आ रहे थे, वो सब हो रहे थे. अगर आप कहीं जॉब में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर उसमें वहाँ पे आप को और दूसरा यू विल ट्राई टू फाइंड कि नहीं मेरा बॉस अच्छा नहीं था, राइट? रिलेशनशिप में इश्यूज है तो यू विल ट्राई टू ब्लेम द पार्टनर मोर देन योरसेल्फ, राइट? कि एंड सिर्फ मार्केट्स में भी ऐसा है, पैसा नहीं बन रहा तो यू विल स्टार्ट टू ब्लेम द मार्केट्स. अरे यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ आता है सिर्फ पैसा बनाते हैं, मतलब पैसा गवा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता. बट हैव यू इवन इंट्रोस्पेक्शन आपने उतना किया है कि हैव यू एवर इन्वेस्टेड दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम? इफ यू आर विलिंग टू टेक दैट मच अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट्स, अगर आपको कमाना है 10,000 की कमाई के लिए आप कॉल सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वो इतने घंटे बिठा के रखेंगे. इफ यू डू अ जॉब ऑल्सो, इवन इफ एन एमबीए आपको वो 15-20 लाख का सैलरी दे रहा है तो वो वहाँ पे 14 घंटे से पहले आपको छोड़ने नहीं देगा. मतलब यू नो हाउ योर लाइफ वुड बी इन दैट फेज. बट हियर इफ यू वांट टू अर्न दैट मच और मोर देन दैट इन 6 hours, so are you able to put that kind of an effort? तो वहाँ पे are you able to do that kind of analysis और उतना स्मार्टली आप काम कर रहे हो क्या कि मार्केट को यहाँ पे दे रहा है? सो you can make lakhs in one day and you can make lakhs in 1 month even if the stock को ज़्यादा मूव भी नहीं करना पड़ेगा. So if you like for example, I'll just give you an example. This is escorts. इन कवर ऑर्डर अगर आपको पता है, जो सब कुछ नए लोग हैं तो कवर ऑर्डर में यूज के मार्जिन हमें बहुत कम लगता है. सो एस्कॉर्ट्स का कवर ऑर्डर अगर इफ यू से सो चलो मार्जिन आपको यहाँ पे दिखाई देता है. एस्कॉर्ट्स का कवर ऑर्डर जो नए लोग हैं उनको मतलब पकड़ लो, चलो लेट अस अज्यूम, इसमें टाइम लग जाएगा. सो लेट अस अज्यूम कि एस्कॉर्ट्स के कवर ऑर्डर में आपको 20-25,000 का मार्जिन लगता है, राइट? एंड 1000 का इसका लॉट साइज है, राइट? तो 20,000 के अगर आपके इसमें 2 लाख दिए तो 10 लॉट्स आप ले सकते हो, राइट? 10 लॉट्स मतलब कि यू कैन से 7,70 to 77 lakhs 80 lakhs के अराउंड की क्वांटिटी आप ले रहे हो एस्कॉर्ट्स की, राइट? विद द कैपिटल दैट यू हैव फॉर एन इंट्राडे. उसमें से अगर 10 लॉट्स मतलब 10,000 क्वांटिटी आप ले रहे हो एंड इफ द स्टॉक इज मूविंग, उसने अगर 10 रुपए का भी मूव दे दिया 1% का, तो ऐसे स्टॉक के लिए एस्कॉर्ट्स के लिए 1% का मूव तो कुछ भी नहीं होता है, राइट? वो इजीली दे देता है. सो फ्रॉम हियर टू हियर भी अगर आप 5 रुपए इसका मूव अगर कैप्चर कर लेते हैं तो इट मतलब वो आपके लिए 50-60,000 विद इन अ मैटर ऑफ 10 minutes. बट ऑन द अदर फ्लिप साइड यू कैन ऑल्सो लूज 50-60,000 इन अ डे, राइट? सो कौन सा आई डाउट कि देर इज एनी अदर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड कि विथ लेस कैपिटल 2 lakhs ऑफ कैपिटल
या 2.5 जितना भी आपका कैपिटल रहेगा। आजकल मार्जिन बढ़ा दिया एक्सचेंज ने, बट पहले के जो मार्जिन थे, बिकॉज द अभी रैंडमनेस मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट हो गया, सो दैट्स व्हाई दे हैव इंक्रीज द मार्जिन। बट स्टिल 1 to 2 years डाउन द लाइन अभी आप चलो 6-7 लॉट खरीद पाते हैं, स्टिल दैट इज नॉट बैड इन कवर ऑर्डर वहाँ पे। बट तो 50-60 थाउजेंड मतलब अराउंड यू कैन से 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विद इन अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स कोई भी आपको बिजनेस दे। बट ये पूरा स्किल, बट हाँ आप उतना लॉस भी कर सकते हो। सो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैपिटल इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर स्किल। अगर आपके पास स्किल है एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, आप बहुत जल्दी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। देयर आर पीपल हु हैव आई नो पीपल हु हैव कन्वर्टेड, मतलब दे हैव मेड देयर 30 lakhs इनटू 1 crore। बट वो सुनने में अच्छा लगता है, बट लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता कि व्हाट दे हैव एफर्ट्स, व्हाट दे हैव पुट इन, राइट, एंड क्या उन्होंने वहां पे किया है, उनको क्या, व्हाट इज द प्रोसेस दैट दे फॉलो, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता। व्हाई? बिकॉज सबको वही चाहिए कि बस वो 30 लाख से 1 करोड़ है तो हमारी आंखें वही चमक जाती है, फिर हम प्लानिंग करने लग जाते हैं कि अच्छा मैं BMW लूंगा, मैं ये लूंगा वो लूंगा। बट उसके पीछे उन्होंने वहां पे कितना एफर्ट और वो सब चीजें डाली, सो वो नो बडी विल ट्राई टू वर्क आउट। ओके, सो नाउ ये आपको बता दिया इतना बेसिक चीजें, एंड दिस इज द लाइफ साइकिल जो ट्रेडर के इसमें एक होता है। फोर्थ फेज हम बाद में आएंगे इसके बाद। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि आप सबसे पहले तो अभी तो मैक्सिमम सैलरी अकाउंट्स हैं नाउ द काफी इंडिया, मतलब जो यंगस्टर्स हैं उनकी भी परचेसिंग पावर काफी बढ़ गई है। सो एवरीबडी जो है ब्रोकर खोलना तो सबके पास तो होता ही है, भले आप क्या करो, जो मतलब जो भी करो, तो वहाँ पे आप स्टार्ट कर देते हैं इन अ वे। आप अपना अकाउंट, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते, कहीं भी एक देख के हाँ चलो यार इजी पैसा है, मेरे दोस्त ने इतना कमाया मार्केट से एंड ही इज अर्निंग, सो आई ऑल्सो अर्निंग, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम हियर समथिंग, कुछ भी 10,000 15,000 कुछ भी हो जाएगा, मेरा घर का रेंट या खाने का पैसा निकल जाएगा। देन व्हाट हैपेंस इज दैट समटाइम्स you buy a penny option, वो 10 times 5 times हो जाता है, you become so much happy and so much that उसी दिन आप पार्टी करने चले जाते हो, सबको बताते हो कि आज मैंने इतना बनाया, राइट, मार्केट से आया हूँ, made my 10,000 has been converted to 25-30,000। then you said okay, who needs education, I can just keep on doing this, right? And उसके बाद क्या है, what happens is that there will be couple of bad trades, not every time the options will multiply, right? And sometimes बुलिश मार्केट में आपने ले लिया, अगली बार आप बुलिश जाओगे मार्केट एकदम से रिवर्स हो जाएगा, लाइक व्हाट वी सी द फेज ऑफ द मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो वहां यू विल लूज मनी डेफिनेटली वहां पे, देन यू विल गेट डिप्रेस्ड, क्या नहीं हो, डिप्रेस तो नहीं होगी बट हाँ ये रहेगा चलो ठीक है ना 10 के गए, मैं और डालूंगा, अभी 20 डालूंगा, एंड देन आप क्योंकि तो आप स्टार्ट स्लो कर रहे हो तो आपके पास कैपिटल होता है, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप लूज करना स्टार्ट करोगे, सो यू विल सी इज दैट ओके आई विल जस्ट रिकवर द मनी एंड देन आई डू इट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर एज एंड व्हेन, जब आप ज्यादा से ज्यादा लूज करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद व्हाट विल हैपन इज दैट कि अगेन यू है कि कहीं बीच में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, राइट, इन समवेयर और द अदर यू विल गेट अ वेरी गुड ट्रेड, अगेन यू विल कॉन्फिडेंस, मतलब दैट्स व्हाट वी से साइकोलॉजी ऑफ अ 5-year-old, लाइक चॉकलेट मिलता है तो वो बड़े रो रहा है, बहुत खुश हो जाता है, राइट, उसको खिलौना जो भी मिलता है, बट उसको अगर वो एक चीज भी नहीं मिलती, छोटी सी चीज अगर उसको चाहिए रहती है तो वो फिर परेशान कर देगा आपको रो रो के, राइट। सो हियर योर साइकोलॉजी जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, यू डोंट लुक एट दिस एज अ काइंड ऑफ विद द सीरियस एंड डेडिकेशन जैसा आपको वो चाहिए रहता है, बट आप इसको जस्ट एज ए गेम के ट्रीट करते हैं, एंड इन दैट सीन व्हाट हैपेंस इज दैट ये साइकिल में आप स्टक रह जाते हो, दैट्स व्हाई इट्स काइंड ऑफ अ साइक्लिकल साइकिल। एंड उसके बाद अगर व्हाट एटलीस्ट अ प्रॉपर प्रोसेस दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट इन एजुकेशन, एजुकेशन मतलब आपको anyway, अगर इफ यू आर डोंट हैव दैट मच टाइम, अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो यहाँ पे what you can see that you can at least try to take quality from the people who are doing it properly, logically जो कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे you will see there are many fake people because the issue with the industry that it is not structured in India, right? So that is a kind of an opportunity also, and that is a kind of a boon also. It is why it is a kind of an opportunity because if you look and in US and everything सब चीजें proper structured है, you they have a history, back history, mentors का पूरा properly हर चीज होता है वहाँ पे, उनके अकाउंट्स होते हैं, आईटी अकाउंट जो भी है वहाँ पे एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड, तो वहाँ पे मतलब पीपल आर आल्सो मोर अवेयर इन अ वे, दे डोंट बिलीव इन प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीनशॉट्स सो इजीली। वो हियर बट द इशू इज दैट कि हम इमोशनल हो जाते हैं प्रॉफिट्स और लॉस को देख के, और हम बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करने लग जाते हैं, राइट।
सो व्हेन वी सी बिग प्रॉफिट्स, एकदम हमारा दिमाग एकदम उसको अरे यार इतना कमा लिया उसने, 3 लाख 4 लाख एकदम एक दिन में कमा लिया, एंड देन वी बिकेम सो मच, वी गेट सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सच थिंग्स दैट वी फॉरगेट लॉजिक. सो दैट इज द वीकनेस दैट वी इंडियंस हैव इन अ वे. एंड जब यहाँ पे आप एजुकेशन करोगे फिर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, एंड एवरीथिंग आप जैसे जैसे आपका लेवल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, देन यू विल बी एबल टू कस्टमाइज द थिंग्स. आप मॉडिफाई कर सकते हो आपके तरीके से, राइट? बिकॉज देन ओनली यू विल गेट एन एज as per your personality. Everybody is a different. Not, I can say not everybody has that kind of a patience. So if you are not patient, you can become a scalper, you can become a intraday with a trader, right? And everything. And if you have a huge patience, and you can go for positional. But there are techniques to do that. For positional, it doesn't mean that every week I'll take one trade. No, for positional it is means that you have to wait for your opportunities. You have to wait for opportunities for longer time and for them to arrive, and also hold them for quite good amount of time. तो आपका और इंट्राडे के लिए एवरी डे ही हैज टू वर्क. सो समटाइम्स he'll get market will, जब बड़े moves आएंगे तो he'll be able to get more money. Sometimes market will just be sideways, so that time he won't be able to get more money. So it is not that every दिन हम टारगेट बनाते हैं कि हर दिन का 5,000 मुझे कमाना. दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट दिस बिजनेस. जो हम करते हैं 5,000 का कोटा हो गया मेरा, खत्म हो गया. Sometimes when the market will give you 50,000, why do you want to stop at 5,000? And किसी दिन आपको it will just make you miserable to earn 5,000 also, right? And so that is the only thing of a success, that is that first of all you need to understand how the market works, right? And that is the only thing that will give you at least an edge. That is a starting point. उसके बाद तो स्ट्रैटेजी वो सब चीजें बात की बात है, बट पहले तो आपको समझना चाहिए कि जो कंपोनेंट्स है, व्हाट इज मूविंग द मार्केट, वो आपको पता होना चाहिए, राइट? एंड दिस इज काइंड ऑफ एक इम्पल्सिव एंड करेक्टिव ऑर्डर फ्लो जो रहता है, जो हमने अगर इंडेक्स हमेशा डिप कर जाता है या कभी कभी स्लो मूवमेंट्स आती है, सो व्हेन देयर इज एन इम्पल्सिव ऑर्डर फ्लो, दिस आर द इन सच इम्पल्सिव मूव्स आर द वंस वेयर यू विल लूज द मोस्ट, राइट? बिकॉज यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप चीजें हैं आपने सीखी होगी या जो भी चीजें इंडिकेटर देखी होगी, वो इंडिकेटर रिएक्ट करेगा तब तक मार्केट यहाँ से यहाँ पहुंच चुका रहेगा, राइट? It will just 4-5.2 to 3% का moves in FNO is quite big. अगर आपका 1-2 लाख का कैपिटल है फिर भी वो काफी आपका इरूट कर जाएगा एकदम से, आपको सीधा मतलब अराउंड 10,000 के ऊपर का लॉस वो देके चला जाएगा मिनिमम. सो यहाँ पे आपको इतना मतलब ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि ऐसे इम्पल्सिव मूव्स में अगर आप फिर एबल यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप उसको पहचान पाओ, थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर पाओ कि यहाँ पे कुछ तो भी एनोमली है मार्केट में. सो वोंट इट बी मच बेटर कि आप यहीं पे एग्जिट करो रादर देन होल्डिंग इट ऑल द वे, जब तक आपका इंडिकेटर, जब तक आपका सिस्टम उसको बता रहा है कि नहीं ये बुलिश है या ये बेयरिश है, जो भी चीज हो गया. एंड देन जो इफ यू आर बिकम आप मैच्योर स्मार्ट होने के बाद आप रिवर्स सोचना भी स्टार्ट कर देते हो, व्हाट वी कॉल्ड एज अ रिवर्स इंजीनियरिंग. एंड वहाँ पे ये सब चीजें कि काइंड ऑफ कि आप यहाँ पे रादर देन जो यहाँ पे बाइंग साइड अगर आप होंगे, आप सडनली सेल साइड सोचना चालू कर देते हो, एंड देन आप को मार्केट आपके वो स्मार्टनेस का, आपके वो व्हाट यू कैन से इम्पल्सिवनेस का रिवॉर्ड मिलता है आपको, right? और इंस्टिंक्ट्स भी रहती है. इंस्टिंक्ट किसी में अच्छी रहती है, किसी में रहती है, बट इंस्टिंक्ट इज द ओनली थिंग कि एक इमोशनल पर्सन में इंस्टिंक्ट हमेशा कम रहेगा. इफ यू वुड हैव नोटिस्ड इन व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर, इफ यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, योर इंस्टिंक्ट क्वालिटी विल ऑलवेज बी लेस. व्हाई? बिकॉज आप उसको हमेशा एक चीज पे यू विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट क्वालिटी. जो भी एक चीज हो रही है, विल ट्राई टू फोकस इट ऑन सो मच ऑफ एनर्जी आपकी वहां पे इन्वेस्ट हो जाएगी कि लॉस हो रहा है तो आप लॉस के बारे में सोच के बेचारा परेशान हो जाएगा. ये आपको लगेगा कि पूरी आपकी मतलब इन अ वे यू आर फीलिंग सो वीक, यू आर फीलिंग सो डिप्रेस्ड, अपनी एनर्जी नहीं है, और आप प्रॉफिट होगा तो आप इतना खुश हो जाओगे कि सबको पता जाएगा कि आज इसको प्रॉफिट हो रहा है. दैट इज काइंड ऑफ अ बीइंग इमोशनल. और जो इंस्टिंक्टिवनेस लोग रहते हैं या जो भी जिसका स्ट्रांग रहता है, इफ यू इट्स काइंड ऑफ अ जनरल ऑब्जर्वेशन व्हिच आई हैव मेड इट, आई कुड बी रॉन्ग इन अ वे, बट जो इंस्टिंक्टिवनेस लोग या जो भी जिनका दैट इज स्ट्रांग, द काइंड ऑफ उनके इमोशनल क्वेश्चन कम होते हैं. एंड इवन इफ these people are not able to, उनको मार्केट उतना समझ में भी नहीं आता ना, फिर भी वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं. So there is I have one of my friend, in fact he has done MBA with me only, तो वैसे ही है. अब उसने 63,000 बैंक निफ्टी में कमाया, राइट? एंड आई फेल्ट, मैं उसको हमेशा देख के आई बिकम सो सरप्राइज कि वो करता भी ऐसे ट्रेड्स बट स्टिल रेयरली मतलब उसका कभी बड़ा लॉस नहीं हुआ है. सो उसका इंस्टिंक्ट इज वेरी हाई, इवन इफ ही हैज टू प्ले पोकर एंड एवरीथिंग. जब भी वो फैंटेसी मतलब जो भी अपने लीग्स होते हैं
आईपीएल की वहां पे भी वो खेलता है तो उसका प्लेयर का लेने का इंस्टिंक्ट एंड दैट इज काइंड ऑफ अ नेचुरल क्वालिटी that we feel कि he is blessed with, but that is fine. तो वो चीज रहती है, बट हर कोई सेम नहीं होता ना, नॉट एवरीबडी कैन रेप्लिकेट दैट, बट व्हाट वी कैन डू इन अ मेजर सेंस इज दैट कि एक प्रोसेस को वी कैन फॉलो, एंड वो प्रोसेस को फॉलो करके देन यू विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट, हर कोई बफे तो बन नहीं सकता, बट अगर हम बफे के अगर 15-20% 10% भी अगर आपने वेल्थ कमा ली तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? एंड आपको मतलब टू लिव योर लाइफ इन अ मच मोर सेटिस्फाइंग वे। तो यहाँ पे जो आपका ये चीज होता है, तो फेज 4 आपका लास्ट होता है, तो उसमें आपका यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ निर्वाणा फेज वेयर यू एक्सेप्ट द मार्केट्स एज दे आर। आप उनको समझ सकते हो, इसमें ऐसा नहीं कि आपको लॉस नहीं हो रहा, लॉस तो कभी, इट्स अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, लॉस तो होना ही है आपको, बट आप इसको यू आर नॉट गेटिंग डिप्रेस बाय सीइंग द लॉस, और उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप बहुत जल्दी पोजीशन से निकल जाते हो if they are in loss, and also you re-enter very easily, मतलब in a way you are looking at the markets exactly as they are, kind of a, जो हम बोलेंगे, it's a collation of information, nothing else. Markets are nothing but just they are the collection of information that is there. It is not there to trap you, it is not there to, what we can say, is to make you rich. It is just there as it is, it is just there in front of you, and it is trying to tell you, okay, this is the thing that is happening. It is up to you how you read it, राइट? दिस काइंड ऑफ कि आप उसको कितना अच्छे से रीड कर पाते हैं, उतना आपको वो, आप उसको अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, सिमिलर। तो यहाँ पे एक दिन में अगर मैं देखूँ जस्ट एस्कॉर्ट्स में, देयर विल बी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी जो चार्ट बनने के बाद दिखता है, राइट? दिस इज काइंड ऑफ अ डबल बॉटम, देन ओवर हियर दिस इज काइंड ऑफ अ पीडीएल, तो यहाँ पे सेल, सो वन ट्रेड ओवर हियर, देन दिस इज काइंड ऑफ अ रेंज ब्रेक वाला जो सेकंड ट्रेड ओवर हियर, देन दिस इज काइंड ऑफ यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो थर्ड ट्रेड ओवर हियर बाय साइड जो नहीं हुआ, वापस फेक ब्रेकआउट, तो फोर्थ ट्रेड ओवर हियर, राइट? अगेन डबल बॉटम, एक ट्रेड यहाँ पे, देन इट ब्रोक दिस लेवल, अगेन एक सेल ट्रेड ओवर हियर, एंड इट इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस, अगेन एक ट्रेड ओवर हियर। सो इवन इफ एस्कॉर्ट्स, मैं अगर बाकी का सब छोड़ दूँ, ओनली इन दिस वन स्टॉक, 1 2 चलो ये हटा दे, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स यू कैन टेक, दिस इज 3 मिनट चार्ट इन वन डे, एवरीथिंग इंडेक्स में भी आपको ये मिलेगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट चार्ट बनने के बाद दिस लुक्स सो इजी, राइट? बट दैट इज व्हाट यू नीड टू डेवलप, इज दैट इन लाइव मार्केट यू शुड बी एबल टू हैव दैट स्किल कि यू आर नॉट गेटिंग अफ्रेड ऑफ द मार्केट। हम डर जाते हैं ना कि हम ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, तो हमें लगता है कि यहाँ से ब्लास्ट ना हो जाए। इफ द मार्केट्स आर नॉट डूइंग, एंड इफ इट इज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो यहाँ पे फेक सिग्नल बना के ट्राई कर रहा है, so then you should be able to react to it quickly, in that quick manner, right? एंड सो इसमें अलग अलग चीजें, वो सब चीजें आप धीरे धीरे जैसे आप करोगे, आपका जो रहेगा तो आप वो सीखेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक इट एटलीस्ट इलैबोरेट इन एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो सच स्ट्रेटेजी, what we also do, there is no such strategy over here. What we do is that we try to make you understand how the market is working in a way, and then there are entries, what we can say, there are 4 entry types that we have. So there are entries depending on which phase the market is. तो अगर markets are in kind of a trending phase, तो आपको ये specific entries पे ज़्यादा focus करना है, unless and until it is showing a reversal size. जब तक वो रिवर्सल नहीं बता रहा, भले आपका बायस कुछ भी बोल रहा हो कि वो 11,000 रेजिस्टेंस है या 12,000 रेजिस्टेंस है, डजंट मैटर. Nobody cares about what your beliefs are, right? Because you are not the one who make the market, and only one big trader is sufficient for the markets to make a move, right? Only one big trader और one big mutual fund house, if उनको लग रहा है कि आज रिलायंस को ऊपर ले जाना है तो वो लेके जा सकते, कोई मतलब, इसलिए देर इज नो सच सफिशिएंट कि हम वो बड़े बड़े 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे के एनालिसिस करके हम वी ट्राई टू अराइव एट दिस, ओके दिस इज द लेवल जहाँ से मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, हम मतलब इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, एंड बट वो कोई ऐसा नहीं है, और फिर जब वो लेवल ब्रेक हो जाता है वही लोग गायब हो जाते हैं, और जब वो लेवल ब्रेक नहीं होता तो वही लोग आपको एकदम दे जस्ट ब्लो आउट द ट्रम्पेट एंड दे से कि ये देखिए हमने कितना अच्छे से यहाँ पे आपको मार्क करके रजिस्टर्स दिया फॉर एग्जाम्पल, राइट? एंड तो वो चीज़ है कि यू शुड बी एबल टू, सबसे पहले ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, एंड इस फेज में आने के लिए इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस, फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम फेज 2 to phase 3 एंड फेज 3 से फेज 4। तो ये फेज तो यहाँ पे भी नहीं, वी आर नॉट से कि हम यहाँ पे मतलब, बट एटलीस्ट फेज 4 में एंट्री अभी एटलीस्ट वी हैव मेड एन एंट्री इनटू फेज 4, एंड दैट इज एविडेंट फ्रॉम द ट्रेड्स वी मेक, जो हमारा माइंडसेट होता है मार्केट्स के बाद का, एंड हाउ वी एक्चुअली डील विद इट एंड एवरीथिंग। तो दिस इज एटलीस्ट व्हाट वी कैन से,
एटलीस्ट विद दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इज दैट कि यहाँ पे एटलीस्ट वी हैव एंटर, वी आर नॉट गेटिंग इमोशनल इन द ट्रेड्स, वी आर एक्सेप्टिंग एज इट इज. समटाइम्स तो इमोशन होते हैं बिकॉज वी बीइंग ह्यूमंस वी कैन नॉट completely take emotional component out of the equation, right? And अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग भी करना है, लाइक वो कि एल्गो ट्रेडिंग हम वो सब चीज़ें, तो एल्गो ट्रेडिंग के लिए भी मार्केट को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एल्गो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट designing an indicator system. It is designing a system based on the markets, how they are working, and depending on different phase of the market. There is not a एक single algo पे कभी भी algo trader नहीं कमाता, उसके पास 2-3 algos होते हैं जो वो modify करता है डिपेंडिंग कि उसको कैसा मार्केट वहाँ पे लग रहा है, राइट? वो सिर्फ एक algo पे लगा के कोई पैसा ऐसा बनाता नहीं. there is no such jackpot algo also, जो कि एक misconception होता है लोगों को वहाँ पे. अगर आपने कभी algos वहाँ पे traders से कभी बात की होगी, उनको पता होगा, तो they have 2 to 3 algos. One of them is very effective और बाकी के उनके तो साइड के algos, एक या दो उनके साइड algos, राइट? एंड विच इज देयर फॉर द रेंज बाउंड मार्केट्स या कुछ ऐसा मार्केट्स रहेगा तो वहां पे वो दे कैन डिप्लॉय ऑन दैट पर्टिकुलर मैन. बट उस चीज को पहुंचने के लिए फर्स्ट यू हैव टू बी अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर इनिशियली. डिस्क्रिशनरी ट्रेडर मींस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन और यूज एन इंडिकेटर, जो भी है डजंट मैटर, बिकॉज वहां से आपको इन अ वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ प्रैक्टिकल वे कि ये कैसा वर्क करता है, हर चीज कैसे, ये सिस्टम कैसा वर्क करता है. एंड उसके बाद देन आप यू कैन गो फॉर दिस हाई. तो मतलब पहले क्या लोग करते हैं, डायरेक्ट लोग पहले पीएचडी करने चले जाते हैं, उसके बाद उनकी जो पहले के अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है उसको छोड़ देते हैं. बट पहले आप अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट, दिस इज काइंड ऑफ दिस थिंग ओनली, दिस फोर्थ है, ये आपको रहता है, दिस इज द एक्सपर्टीज स्टेज जो यहाँ पे आपको, एंड दिस इज अ फुल टाइम प्रोफेशन. ये फुल टाइम ही करना पड़ेगा आपको. ये यू कैन नॉट बी एबल टू पार्ट टाइम करके, यू वोंट बी एबल टू डू इट दैट मच. हाँ अच्छा कर लोगे, बट आपकी कैपेसिटी जितनी रहेगी उससे आप उतना, मतलब अगर आप फुल टाइम करोगे तो आपकी कैपेसिटी यू कैन डू इट इन मच मच मोर बेटर वे. एंड ये जो है चीज़ें यहाँ पे इस काइंड ऑफ, हम जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं 10वीं 12वीं, ये हमारी एग्जाम उस टाइप की रहती है कि कुछ भी आया चलो, दिस इज काइंड ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट वेरिया. जस्ट आप इंजीनियरिंग है जैसे एग्जाम्पल आप ले तो रहे हो किसी ब्रांच में, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो उस ब्रांच में. ये आपका इन अ वे काइंड ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे होता है, वेर यू कैन फेज 3, जहाँ पे आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो. एंड दिस इज काइंड ऑफ अ योर एक्सपर्टीज लेवल, जहाँ पे यू आर फाइन ट्यून हो जाते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एंड दिस इज व्हाट इज राइट फॉर, राइट? एंड देन आफ्टर दैट अगेन जो ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया. सो एक फेज होता है मार्केट का जो आपको बताया मैंने, रीट्रेड किया वो काफी टाइम. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. देन यू नो क्रिटिकल जोन. सो नॉट एवरी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आर important, that is everything. We just drawing support and resistance is like you are just a kid who is drawing lines on the canvas, right? So not every support resistance levels are critical zone. You have to, there are some zones which would be very very crucial for the market. Like for example, if we what how we work is that in that manner is that if we look at the charts over here, right? I'll just go to photos and yeah, so these are some of the zones over here. This zone is much more important than the others. So this is what we maximum times do is that it's kind of a, we mark the critical zone which is much more important, and the stock is standing at a much important level. So if you look at this zones, and then if your trading decisions are based on that particular zone, then markets, you are able to understand the points from where the big players would be able to create the order flows over here. So this is why if this happens, if such candles happen, we don't get biased we don't get biased that okay it's a buy signal now, right? Like over here, if in Tata Steel that day when the move came, it gives so big candles. So if a normal rookie trader is looking, what he'll look into by seeing such a big candle is that the stock will just blast up. But what happened is that after such candle, the stock just went up in the range. It was not able to break this zone. And if one time, like we'll see from the live chart only, so that at least the who are complete beginners, they would find it a little bit difficult to relate कि मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, but still ये धीरे 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 आपको जो चीज़ें हैं बाद में समझना स्टार्ट हो जाएगी. तो ओके, सो आई गेस ये वाला फेस, right? So this was the higher zone of critical zone which was marked. So it doesn't matter, but ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे भी सोल्ड it. Doesn't matter कि ये कैंडल क्या है उसको फर्क नहीं पड़ता. You just
have done the analysis, you have marked the zone, important zone, and then you have to just let the market do its bit. And when it becomes stagnant over here, and also there's no follow-up coming. So there are certain rules that we follow. So no follow-up and everything which was coming in the breakouts that was happening. So यहाँ पे जो रहेगा, फिर यहाँ पे सेल किया था, एंड अगेन यहाँ पे ये तो जो है सपोर्ट ही है, यहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक पार्शियल क्वांटिटी यू कैन एग्जिट, एंड पार्शियल आप ट्रेल कर दे जाओ जहाँ पे भी है, तो पार्शियल क्वांटिटी फिर यहाँ पे एग्जिट की थी, एंड समटाइम्स यहाँ पे ये जोन में गई थोड़ी नेक्स्ट रेस्ट वाली क्वांटिटी जो थी that pays it. And again, you see, this was a kind of a zone where it again tried to take a support, but market में यहाँ पे volumes you can see पूरा dip हो गया था. So right, so this is what it's a kind of a adaptability that you should have. तो ऐसे केस में if you have an adaptability, then you will not be getting trapped by the market so easily, because यहाँ पे आपका bias बन जाता है कि ये break किया, अब तो ये ट्रिपल टॉप को उसने ब्रेक किया, in a way just it's a very good pattern, it will just blast. But what will happen if you have taken it as a positional also, then you can see what the market has done to the stock. कहाँ पे वो स्टॉक गया है, राइट, नीचे तक पूरा, वहां से मतलब 20 पॉइंट्स का डिप दे दिया उसने, अराउंड 18 पॉइंट्स का. So just because you are wrong and आप उसको adjust नहीं कर पा रहे हो, so you have to pay a very heavy penalty for that. And if you are able to adjust that, and now this is kind of a fake signal, अगर उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो अगर आप सेल कर दे रहे हो तो आपको फिर उतना रिवॉर्ड भी आपके स्मार्टनेस का मार्केट ने आपको दिया, राइट. सो जस्ट इट इज नॉट अ काइंड ऑफ कि एनालिसिस करके आप बैठ गए और आपका बस उसका आपका रिवॉर्ड मिलेगा. देयर आर वेरी वेरी गुड मार्केट एनालिस्ट, बिकॉज आई हैव वर्क फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक, आई नो वहाँ पे वेरी गुड इक्विटी एनालिस्ट, बट दे आर नॉट गुड ट्रेडर्स, and very good traders, they are not good analysts, right? So why is that? The important thing you need to understand, there is only one thing that will make you successful in trading, that is your psychology. Oh, nothing else. Strategy, everything, and knowledge and everything is 20% and everything, but yes, psychology would be 80%. And once you are able to understand and like tune your psychology as per what the trading or what the market demands, then you will find it so easy and so much fun to work with, and you will just enjoy doing every bit of it, and you don't need to do anything, because markets are so big and everything that even if you are a beggar, you come in here with 1 lakh, it can make it 1 crore in a year if you do the things right. It is so generous, and at the same time it is a very big miser. It will you can say एक एक पैसे के लिए आपको तड़पा देगा वो कभी, राइट. तो वो चीज़ है, वो आपको समझ में आना चाहिए. सम डेज you will not be just be able to understand what the markets are doing. As a person you have to accept that. नहीं समझ में आ रहा है, आज मैं ट्रेडिंग बहुत कम करूँगा. Today I will not just go overboard into it. नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, fine. Sometimes होता है वो, right? Not every day. Even Einstein was not able to trade the markets in a way. मतलब उसका सुना कि because इसने वही बोला कि the most difficult thing to analyze, and he went after mathematical models. The most difficult thing to analyze is the human emotions. Most difficult thing to quantify is human emotions. So why it is most difficult is that कि वहाँ पे आपको जो चीजें है, ये पूरा emotions का ही खेल है. And in the markets, one has to lose for other to win, right? Money is not created over here. So how can a person or a big player make a retail traders lose? In a way, they'll give them a bookish pattern, right, where they will enter, and then they'll just create a fake move and they'll reverse, and the retail players will just keep us there wondering what is happening, why the market is moving like this, but he'll not think in that particular way, isn't this an opportunity on the opposite side? ये तो दूसरे साइड है ना, बाय साइड नहीं हो तो सेल साइड मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना मार्केट, मैं वहां क्यों नहीं जा रहा, राइट. सो वो हियर अगर टाटा स्टील में अगर बाय साइड नहीं चल रहा है, अगर सेल साइड मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इवन अगर यहाँ पे आप समझ लीजिए चलो एंटर करके आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते, बट यहाँ पे जब मार्केट ऐसा मूव कर रहा था, राइट, तब आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए ना कि वो नहीं क्रॉस कर पा रहा है अभी. तो इट इज काइंड ऑफ ये जो ब्रेकआउट दिया मार्केट ने वो फेक है, और यहाँ पे मुझे निकल जाना चाहिए विद लेस लॉस अगर होगा भी तो, या कॉस्ट पे. और अगर नहीं निकल रहे हो तो फिर आपको इतने बार चांस मिले, वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, राइट. तो वो नहीं कर पा रहा था, देन इट इज योर मिस्टेक. मार्केट हैज गिवन यू मल्टी, इस बार तो भी 3 बार चांस दे दिया, कभी कभी एक ही चांस मिलता है आपको, और फिर यहाँ से वो सीधा रिवर्स हो जाता है, राइट. क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए आप, ये 3 ग्रीन वॉल्यूम्स में इतने ज्यादा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बायर्स बैठे होंगे और उसके बाद वॉल्यूम डिप हो गया. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट
कि बड़े प्लेयर्स ने ये मूव बनाया, राइट, उन्होंने सेल नहीं किया यहाँ पे, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दे हैव नॉट सोल्ड ओवर हियर, बस मूव बना के छोड़ दिया। व्हाट दे हैव डन इज नेक्स्ट डे बेचना चालू कर दिया एंड यहाँ पे उन्होंने फिर प्रॉफिट कमाया। ऑन दैट डे डिडंट अर्न प्रॉफिट, ऑन दैट डे उन्होंने सिर्फ ट्रैप क्रिएट किया, नेक्स्ट डे उन्होंने फिर पैसा कमाया उसमें एंड रिटेल ट्रेडर्स फिर ट्रैप हो गए इस खेल में, राइट। सो देन यू नीड टू प्राइस एक्शन जो रहता है या जो भी आप वॉट एवर सिस्टम दैट यूज, इवन इंडिकेटर प्राइस एक्शन है तो वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिकेटर, ऐसा कुछ नहीं। प्राइस एक्शन इफ यू अंडरस्टैंड देन इफ यू वांट टू यूज इंडिकेटर तो आप उसको उसकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे एग्जैक्टली उसको कहाँ पे यूज करना, राइट। देन यू डोंट हैव टू यू वोंट बी देन fully dependent on indicator, but your mindset would be trained to first look at the confluence of a price and volume, how are they proper, and then you will then look at the indicator if it is giving a signal or not, if you want. If you become, if you don't want to work with an indicator, that is also fine, but you should not be egoistic in your everything. If you're feeling that okay सिर्फ raw price से मेरा नहीं हो रहा है, then use an indicator, that is not an, but if you think that okay raw price से मेरा हो रहा है, then there is no point in using an indicator. You should use it as per your, don't look at others and उसको देख के मत करो। लोग बोलते हैं कि हम प्राइस एक्शन है, मेरे को सिर्फ प्राइस एक्शन ही देखना है, मुझे कुछ नहीं, पर उनको जमता भी नहीं है, राइट, बिकॉज वो उसका नहीं रहता उनका माइंडसेट, वो एक्सेप्ट नहीं करते अंदर से कि प्राइस एक्शन नहीं करना, उनके अंदर ही अंदर रहता नहीं यार मेरे को इंडिकेटर एक यूज करना ही है, उसके बिना मुझे कंफर्ट लेवल नहीं आता, राइट। सो वॉट एवर बी डजंट मैटर, दैट इज व्हाट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट यू हैव टू फाइंड योर ओन निशे। उसके बाद आपका एनालिसिस के बाद आप जो ट्रेड्स एंटर करोगे डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल, यू कैन एंटर कंजर्वेटिवली और एग्रेसिवली, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस थ्री थिंग्स जो रहता है आपके, इट शुड ऑलवेज बी इन हार्मनी, माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज, यू शुड नॉट शिवर, यू शुड नॉट बी गेटिंग एक्साइटेड सीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्लैप नहीं करना चाहिए, जो से प्रॉफिट मिल रहा है तो बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग, वैसी चीजें नहीं, और लॉस हो रहा है तो फिर आपको ज्यादा डिप्रेशन नहीं, नॉर्मल, हाँ थोड़ा सा मतलब यू शुड बी एबल टू बैलेंस एवरीथिंग इन ट्रेडिंग सिस्टम, आपका एक होना चाहिए एनालिसिस, टाइमिंग आपकी, वह दोनों ये चीजें होनी चाहिए, एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो क्योंकि आप कितना रिस्क कर रहे हो तो वो सब है, तो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ अ ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे हमारा होता है। दिस आर टू लैपटॉप्स ओवर हियर एंड ये एक बड़ी स्क्रीन होती है, दिस इज 32 इंच एंड ये 24 इंच वाली स्क्रीन, दिस इज द टू, मतलब अभी तक व्हाट इज द टर्मिनल ओवर हियर, एंड जनरली नहीं लगता है लोगों को इतना, बट हम करते हैं बिकॉज वी आर डूइंग इट फुल टाइम, सो डेफिनेटली उसको मतलब थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज छोटे स्क्रीन में फिर आप चार्ज देखने में डिफिकल्टी हो जाती है, यू हैव टू स्ट्रेन योर आइज टू मच, सो फॉर दैट रीजन ओनली। बट इफ यू डिपेंडिंग आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन एवरीथिंग, इवन अ लैपटॉप इज सफिशिएंट फॉर यू, एंड मैक्सिमम अगर आप फुल टाइम करें तो लैपटॉप एंड स्क्रीन इज मोर देन इनफ फॉर यू, अगर आप उतना भी अगर कर रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद what we do as a contribution is that the important thing is that यहाँ पे हम देखा कि there are very fake people in this industry who doesn't have actually, उनके पास ना qualification होते, qualification doesn't matter in the market that much, that we agree, but the important thing is that कि उनके पास वो knowledge नहीं होता, what they is that they just open range breakout या कुछ भी, मतलब ये से you can say just a static कुछ भी बकवास सी चीज सिखा देते, 50 मिनट्स का रेंज ब्रेकआउट हो गया जस्ट बाय और सेल इट, तो वो चीजें, और उसमें क्या है स्टॉप लॉसेस इंट्राडे में, इफ यू आर टेकिंग स्टॉप लॉसेस ऑफ मोर देन 1% इन इंट्राडे, देन यू आर नॉट डूइंग इंट्राडे, मतलब वहां पे आप इतने बड़े स्टॉप लॉसेस के अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सो देन वो स्टॉक ही मूवमेंट एक दिन में 2% 3% मैक्सिमम होता है, उसमें 1% का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड इज काइंड ऑफ अ वेरी मिजरेबल। So these people, they are either keep very lost of, they don't know what they are doing and everything, and that's what they is that they'll just show big profits and everything, and वहाँ पे manipulate करेंगे लोगों को, they try to influence over it. But if you ask them what is the logic behind what they are doing or what they are, they'll never tell you because उनको खुद को ही नहीं पता रहता। तो ये हमारा मतलब वही रहता है कि एटलीस्ट साइकोलॉजी, मनी एंड एवरीथिंग, प्राइस एक्शन या जो भी चीज है, इट शुड एवरीथिंग शुड बी सिस्टमैटिक, एंड यू शुड बी एबल टू, जो भी आप क्वेश्चन कर पाओ, वी शुड बी एबल टू आंसर इट इन अ वेरी प्रॉपर एंड लॉजिकल मैनर, एंड तो एंड एवरीथिंग इज आंसरेबल, कोई ऐसी डिफिकल्ट नहीं है, मार्केट्स आर वेरी सिंपल, बस आपको उस लेवल तक मैच्योरिटी आपकी पहुंचानी पड़ती है। उसके बाद देयर इज अ केआर फैमिली, दैट्स अ काइंड ऑफ ओपन डिस्कशन ग्रुप व्हिच वी हैव मेड, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स यू माइट बी एबल टू सी, तो इस स्क्रीनशॉट्स में यहाँ पे व्हाटएवर द डिस्कशन एंड व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक विद other members also, for the core, this is a core group,
जिन्होंने हमसे सेशंस लिए उनके लिए ये है। तो वहाँ पे जो रहता है, इवन इफ वी वांट वी कैन कंट्रीब्यूट, अदर्स कैन कंट्रीब्यूट, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइफ लॉन्ग डिस्कशन ग्रुप, बिकॉज वी हैव वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी विच कैन हेल्प पीपल इन अ पर्टिकुलर, नॉट काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कि हाँ भाई कोर्स हो गया तो सिखा दो, बिकॉज कोर्स करके सेशन करके देर इज नथिंग दैट वो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इट्स काइंड ऑफ अ प्रोसेस। फॉर सम इट माइट टेक कपल ऑफ वीक्स, फॉर सम कपल ऑफ मंथ्स, और किसी को तो वो 1-2 साल भी लग सकता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ पर्सनल, कितना आपका टाइम इन्वेस्ट कर पाते हो, आप कितना कर पाते हो, उस पर वो डिपेंड करता है। एंड देन देयर इज अ प्रीमियम चार्टिंग चैनल विच वी हैव शोन कि वहाँ पे अपडेट्स जो है, दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पे वॉट एवर द थिंग्स एंड जो स्टॉप लॉसेस अपडेट्स या वॉट एवर जो चीज़ें होती है, लर्निंग जो होती है, तो यहाँ पे विद चार्ट्स एंड वी पुट इट बिफोर हैंड। सो इफ दिस इज रिलायंस, इफ बाय आता है तो 9:30 बजे ही, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही बता देते हैं विद जोन, सो दैट people would be ready if the stock comes in that zone. तो this even the nifty जो है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को हम रियल टाइम नहीं बताते बिकॉज स्टॉक्स को बताते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को, बट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। बट जो रहता है मार्केट ओपनिंग के पहले ही यहाँ पे वी अपडेट बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हो गया। एंड ऑल्सो देर आर प्री ओपन स्टॉक्स, ये जो मार्केट ओपन होने से पहले लाइक 9 o'clock एंड दिस वी अपडेट करते, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी रेडी depending if the stock is doing something as per price action on this based on the critical zone, then you would can be able to take the positions, take your positions in there, right? And also therefore the after session there will be weekly doubt solving sessions also for the members who have completed that, so that because it's a kind of a completely learning process and आपको वो सीखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 2-3 हफ्ता या 1 month 1.5 months if you have done something and after that जो चीज़ें हैं कि आपको आ गई, राइट? इट्स काइंड ऑफ इवॉल्विंग प्रोसेस बिकॉज मार्केट्स आर आल्सो इवॉल्विंग। कुछ कुछ नई चीज़ें और यू आर एनीथिंग इट विल कीप ऑन, आपके डाउट्स भी काफ़ी सारे आएंगे। सम ट्रेड्स आपने लिया होगा, एवरीथिंग इज, यू कैन सी एवरी सिस्टम इट इज फॉलोइंग, बट इट जस्ट डिडंट वर्क। सो वो क्यों नहीं वर्क कर रहा है, वो सब चीज़ें हैं, तो वो आपको धीरे धीरे फिर वो चीज़ें आपको समझने के लिए जो है दिस काइंड ऑफ सेशंस वी हैव। एंड yes, so we have started this from initial stages। हमने वही बोला था कि if anybody is not satisfied, so we are not here for the money, but we are also to create a good community for the people who are who want to are passionate about the markets and want to learn from it in the right way. And so for them, then if you are not satisfied or if anybody is not satisfied, we are also happy to give them complete refund, because that is not, we are making sufficient from our trading income, but this is just we are doing। तो आप जिंदगी में बोर ना हो जाए बस, क्योंकि लाइफ में ट्रेडिंग ऐसा रहता है कि ट्रेडिंग काफी थोड़ा आइसोलेशन वाला बिजनेस हो जाता है। तो एटलीस्ट इससे आपको नई नई चीजों से, पीपल से यू कीप वी आर एबल टू इंटरेक्ट विद देम। सो लाइक वी हैव पीपल फ्रॉम एयरफोर्स and that is quite at least good, you can say proud moment for us also। So we have people from Air Force with us, good businessmen, people from all from South and from Gujarat, both from good walks of life also। Then there are maximum are people are working, and also and good also thing is that there are a couple of female candidates also, and so that kind of shows that the other gender, at least females people, and they also are able to have that kind of that showing interest in the markets। So different walks of life helps us to gain some experience and some things also that we learn from। आप लोगों से learn करते हैं, बाकी से learn करते हैं, तो वो it is kind of a, वो आप हमारे हमेशा एक अच्छा ही होता है। किसी के साथ आप नॉलेज शेयर करते हो या किसी के साथ आप ये चीज़ें करते हो, सो हमारा फोकस वही रहता है कि एक हेल्दी एटमोसफेयर क्रिएट किए। तो सो इफ यू आर वर्किंग कैंडिडेट एंड एवरीथिंग, तो ये चार्टिंग सर्विस का वही देयर इज, एंड इट इज फ्री फॉर द चार्टिंग जो हमारे सेशन के मेंबर्स हैं। तो फॉर देम ऑल्सो की जो वर्किंग के लोग होते हैं, सो एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू विथ लेस अमाउंट ऑफ टाइम हमारे एनालिसिस का फायदा उनको मिल सके, राइट? So anything, this is the kind of you can say that journey that currently जो हम focus करते हैं, मतलब अभी तक जो what is a phase that we have gone through in the past 4-5 years। And in case I'll just open the forum for questions, you can unmute yourself, and in case if you want to ask some questions, you are free to ask them। So do unmute yourself first, and then you can ask it if you have any question। Yeah, you can unmute yourself
Yeah, hi Venkatesh. One minute, I'm not able to hear you. Just a minute. Hello. Yeah. Yeah, Venkatesh, you have had any question? You can unmute yourself and you can ask. Yeah, talking about positional or intraday. Okay, so it's kind of a both everything because the positional is just for the positional VIX is important for you. Intraday also it is important for positional also. You will look at the higher time frame, which is your 30 minutes or 1 hour. So if you want to take for a couple of days or say like 1 to 2 weeks for you want to do it for 2 3 weeks, then you need to look at least 4 hour chart, right, and daily chart over here. Let's see if it is opening. Okay, there was a background noise. Okay, I didn't hear it. I guess something issue with some other mic. Someone might not have muted it. Okay. So over here, so like for the 60-minute chart over here in Tata Steel that you can see over here, and kind of what happens is that in the positional purpose you need to look at the very some points would be there. So where the market would take a swing as in where it's very difficult to take continuation of trend in the higher time frame, but also you need to wait for the points where there are important points. Like for Tata Steel now, this was the zone, right? This was the zone around 530 zone. It was multiple, it was trying to break it, but it didn't. And then again on I guess for 1st April it opened gap up. So if an aggressive player, he would have entered straight away over here, and if you are a defensive player, then you would have waited for the stock to come to this level, and then you could have taken entry over here, right? As when you can see the volumes are also dipping over here, and as the volumes are also dipping over, you can see that the sellers are getting nervous to sell at these levels, right? And since they are getting nervous to sell at this level, that this is the point where a positional buy player should be able to enter the market. If this is not, then again this over here. So on the first retracement to the important zone over here, that is what should be the one thing that a positional player should be able to understand. These are the zones which can act as a buying zone or selling zone for it, right? So the concepts are same. It's just that noise is less in positional, right? And noise would be higher in intraday. But also the important thing is that your risk would be higher in positional. You will have to at least at 2% of risk cap, around 2% of the stock, that would be a risk over here. And in intraday you can do it with less than 0.5%. Okay. Anything else? Any other question that you might have? तो आप लोग पूछ सकते हो. अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को बस वहां से, एंड ताकि आपका वॉइस सुनाई आए, और यू कैन चैट. वहां से चैट विंडो में आप डाल सकते हो कि अगर वहां पे. ओके, नो इश्यूज. देन यू हैव बीन एडेड टू द अभी इंट्रोडक्टरी चैनल पे आपको ऐड कर दिया, एंड दोज आर न्यू मेंबर्स. They would be added, given a trial of the premium channel for 2 weeks. So at least you would be able to see कि हमारा कैसे working होता है and क्या चीजें होती है and everything, how is it logical and everything. And our main focus is not on knowledge and on learning. So जो भी what that we have started this in the first place is to give as much as knowledge as we can in a better and in a you can say a logical way to people over here. So we hope that you will like it definitely, and we also do hope that you have at least session say you might have taken some takeaways from the session, and it would help you in some of the other way. And thank you for your time. And in case you have any doubts, you can ask us in the introductory group that you have been added. So with this, I'll just conclude the session, and thanks for attending it. Yeah. Bye.